We've been crying out in the women's game for the women's IPL to start. It's as competitive, it is as skillful, and I think to me that's really significant. This is where the audiences are, this is where the money is. Commercial opportunity of the women's IPL is huge, but it's not going to be profitable from day one and it's not going to be easy. कि अब दिन ब दिन एक अच्छी न्यूज़ सुनने में आ रही है, वुमेन्स IPL अगर आता है तो वो एक रेवोल्यूशन लेके आएगा. So the IPL turned cricket from a game where people were fretting about whether it had a future, about whether it was in terminal decline, into one of the hottest sport properties in the world. I think it has dramatically changed cricket for the better. First and foremost is attention spans were getting shorter and shorter. Here comes a nicely packaged format, 3 hours, evening games, night games. So you finish work, you tune on the television or you go to the ground. Every ball is exciting. So there's action all the time. No other sporting league in the world has been able to achieve what IPL has achieved in about 14-15 years. I think it's quite remarkable, even when you compare it with any of the other leagues in the world, because it is among the top leagues in the world in terms of actual dollar value. You have hundreds of millions of people tuning in to watch matches, which you can't say about many other sports taking place elsewhere in the world. So for broadcasters, getting a piece of the IPL is a game changer, especially if you're an international broadcaster looking to come into India. There's a fan base who really feel attached to franchises, who feel a sense of ownership of their team. Now, naturally, this sort of gives an opportunity to diversify into women's cricket. Women cricketers in India have always played very good cricket, completely away from public glare. And I think what they have clearly lacked is public adulation, the kind that men's cricket has always enjoyed in this country. मेरी नाम सुजाता मलिक है. मैं उड़ीसा से भुवनेश्वर डिस्ट्रिक्ट में रहती हूँ और उड़ीसा की तरफ से खेलती हूँ. मैं 29 years old and मैं मीडियम फास्ट बॉलिंग करती हूँ, ओपनिंग करती हूँ उड़ीसा की तरफ से. जब मैं शुरू की थी तो सच बताएं तो मेरे पास कुछ भी नहीं था, ना जूता था ना कुछ. तो वो सब मुझे पहले सर दे दिए थे. हम लोग कन्वेंस जूता होता है जो स्कूल का, उससे शुरू की थी. पहली बार सीनियर डोमेस्टिक खेलती 2006 में, जबकि तब था मैच मनी 2500 और अब है 20,000. वो काफ़ी मतलब डिफरेंस है. So the BCCI announced recently that they were going to provide equal match fees to men and women's players. That was a really important step in order to show that they're serious about making sure that women have the same opportunities as men when they're playing, at the highest level. बिल्कुल होगा. पहले तो मैं बताऊंगी जो पे इक्वालिटी हुई है ये एक ज़बरदस्त स्टेप रहा है बीसीसीआई का. वो इसलिए क्योंकि ये और गर्ल्स को मोटिवेट करेगा टॉप लेवल पे खेलने के लिए. जब आपकी मोटिवेशन बढ़ती है, क्योंकि आपको उसमें सिक्योरिटी दिख रही है, तो वो सिक्योरिटी अब सिर्फ वो लड़की नहीं देखेगी, उसके पेरेंट्स भी देखेंगे. There's a lot of talk about equal pay in women's sport in general. For me, it's equal opportunity. And I think that's what we're now starting to see in women's sport, is that women and girls are getting more opportunity to do the things that young boys or young men were doing from maybe a younger age. My name is Sakshi Thakur. I am a bowling all-rounder. स्टार्टिंग में जब क्रिकेट में डाला था तब उस टाइम पे काफ़ी बोला था कि ठीक है ऐसे जाते हैं लड़कों के साथ खेलने चले जाते हैं, फिर रात को मतलब अंधेरा हो जाता है तब वापस आते हैं, क्यों भेजा है क्यों डाला है. क्योंकि मेरे को हम 10 years से क्रिकेट खेल रहे हैं और अभी अचीवमेंट मिलना लास्ट 2-3-4 years से हुई है चालू कि अब हम खेल रहे हैं ऐसे. उस टाइम पे हमारे पेरेंट्स काफ़ी सपोर्टिव थे हमारे लिए, तो उन्होंने सिर्फ हमें जाने दिया कि ठीक है बोलने दो जो बोल रहा है, ठीक है तुम करोगे, तुम करके दिखाओगे तो कोई कुछ नहीं बोलेगा. और आज ऐसा टाइम है कि अगर हम करते हैं तो सब अप्रिशिएट करते हैं उस चीज़ को. तो बोलने से पहले जो लोग बोलते थे आज वही लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं. We're kind of making girls learn the hard way because they've not had the opportunity to play in front of many crowds, in front of, on TV consistently. That's what the game has needed. We've needed to push it on quickly.
It's obviously a bigger challenge to sort of commercialize the women's game in the same way as the men's game, and so it's important to have perspective on this. Take England, for example. Just look at the growth of the Women's Premier League in England in terms of the viewership, in terms of the deals, in terms of the value, and then think about how that's translated into England's success at the Euros this summer. There was just a lot more talk about women's sport, and for the first time I heard the narrative of there's a game of football tonight, and it wasn't women are playing football, it was just a game of football. The main difference between the women's IPL and men's IPL is that it was easier to commercialize and make money right from the word go. In the case of women's cricket, it is a little bit of an unknown territory. Frankly speaking, we are not looking at the commercial aspect to begin with. We are wanting to create a great property out of this tournament. We are wanting to give opportunities to our women cricketers. उस टाइम जब पापा जब तक थे तो लाइफ अच्छे से ही जा रहे थे, सिर्फ क्रिकेट में ही जा रहे थे, लेकिन पापा की अचानक जो उनका जो देहांत हुआ उसके बाद से मेरा लाइफ एकदम यू टर्न लिया है। सच बताएं तो ये जो काम, घर का रिस्पॉन्सिबल, फिर हमारे ऑफिस, फिर खेल, माइंड कभी कभी ना एकदम जाम सा हो जाता है। क्या कर रही हूँ मैं, दिन भर तो भाग ही रही हूँ, और क्यों भाग रही हूँ? अभी तक तो कुछ अचीवमेंट क्या, स्टेट खेल रही हूँ बस, अभी तो कुछ ज़्यादा अचीव भी नहीं हुआ, आगे क्या होगा? कभी वो जो सपना देखे हैं कभी पूरा कर पाएंगे? बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आया। हर दिन मैं जब रात को सोती हूँ तो सोचती हूँ कि ये क्या सच हो पाएगा जिसके लिए हम 15 साल से दौड़ रहे हैं। The attitude towards women in India has been changing, but very slowly. India still tends to be traditional, rather conservative society where women are expected to get educated, have a career until they get married. But after that, they should just make home, look after their family, and not really think very passionately about their careers. That is what the society at large would expect of women. But things are changing because financial pressures are increasing, women are becoming more assertive. Attitudes have started changing, but very slowly. My name is Preeti Rajwahan. Right now, अभी मैं हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन धर्मशाला में रेजिडेंशियल एकेडमी देख रही हूँ। 2016 मेरा लास्ट था एट रांची में हमारे सीनियर्स के मैचेस थे, वो मेरा लास्ट सीज़न था। उसके बाद मैं छोड़ दिया था, किसी रीज़न से मैंने ड्रॉप कर लिया था। देन उसके बाद मैंने इस चीज़ से थोड़ा हट के मैं ट्रेनिंग लाइन में आ गई थी। लेकिन अब आप देखेंगे काफ़ी एरियाज़ हैं जहाँ पे आप क्रिकेट छोड़ने के बाद काम कर सकते हैं। आपके लिए वो जॉब है, आपके लिए वो फ्यूचर है। खेलने के बाद पहले क्या था, फुल स्टॉप, अब हम क्या करेंगे? कई ने शादी कर ली, कई प्राइवेट बिजनेस में चले गए, किसी ने अपना खुद का बिजनेस शुरू कर दिया, कोई जॉब ढूंढने में लग गया। लेकिन अब मैच रेफरी है, वीडियो एनालिस्ट हैं, लॉजिस्टिक मैनेजर्स वगैरह का अब कोर्स हो रहा है, स्कोरर का हो रहा है, एम्पायरिंग नज़र आ रहे हैं आप करते हुए वुमेंस का। ब्रॉडकास्टर में मुझे ये फील्ड बड़ी पसंद आई क्योंकि मैंने कभी सोचा भी नहीं था और मैं क्रिकेट में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थी। अब अच्छा लगता है कि इन्वॉल्व हूँ क्योंकि बैट हाथ में नहीं है लेकिन माइक हाथ में है। न्यू का तो मुझे अभी भी लगता है कि मुझे कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं देखती हूँ कि विमेन आईपीएल के लिए कहीं ना कहीं मेरा है एक ज़ील है अंदर कि मैं खेलना चाहती हूँ ये, क्योंकि आपने इतने सीज़न खेल चुके हो, आप पीछे 2009 से आप खेल रहे हो और आपने छोड़ा है 2016 तक, तो एक लगाव, एक जुड़ा हुआ है क्रिकेट के साथ मेरा। तो मैं चाहती हूँ कि मैं आईपीएल के लिए तो डेफिनेटली वुमेन आईपीएल के लिए तो मैं करना चाहूँगी डेफिनेटली, यस। सो वो स्टोरीज लोग जानना चाहते हैं। बहुत ऐसे अनसंग हीरोज़ हैं जो स्ट्रगल करते हुए आए हैं, जिन्होंने कैसे कैसे अपने अपने घर बनाए हैं क्रिकेट खेलने के बाद, अपना फ्यूचर बनाया है, अपनी ज़िंदगी चेंज हुई है उनकी। सो वो स्टोरीज़ आपको मेरे को बताना एज अ ब्रॉडकास्टर बड़ा अच्छा लगता है कि लड़कों को पता नहीं चले इसका स्ट्रगल क्या है, ये कैसे आई है। क्योंकि जब शुरू किए थे हम सोचे थे कि हाँ मैं खेलूँगी, इंडिया ही खेलूँगी, जब खेलूँगी तो इंडिया खेलूँगी, और मुझे नहीं पता था कि 15 साल बीत जाएंगे इस बीच वहाँ जाने के लिए भी। लेकिन मैं जब सोचती हूँ कि हाँ टाइम तो ज़्यादा हो गया है, लेकिन खेल के ही छोड़ेंगे, जब इंडिया खेलेंगे तभी छोड़ेंगे। और मैं भी सोच रही हूँ कि अगर मुझे भी वो मौका मिलता है तो मैं डेफिनेटली आईपीएल में बहुत अच्छा करने की कोशिश करूँगी, ताकि
आईपीएल से ही सही मुझे इंडिया में आ जाना पड़े। If the women's IPL doesn't work out for whatever reason, whether this season or in later seasons, it'll be a blow, it'll be a big disappointment, but it's not going to stop the rise of women's cricket in India, which is happening one way or the other. Profits would eventually come, we are very sure of that. Given the interest that we have got with regard to franchises from the media groups and from the sponsorship point of view, there are things that you can draw from, which is essentially what is happening to men's and women's sports around the globe, whether it's basketball or soccer or whatever. So that also gives you, it's a good indicator of where it might land. But the sentiment is definitely positive. Better marketing around women's cricket creates a virtuous cycle. So you get more fans interested, more people tuning in to watch the matches or going to the stadiums, right? That in turn gets broadcasters interested. Broadcasters are willing to spend more money on the rights to broadcast those games. Then you get advertisers interested because they want to get the eyeballs that are watching the matches. Then you get the sponsors who want to put money into the teams. That finds its way to the players, the top level players. And then ultimately that then trickles down, right, into the grassroots where these teams, in order to stay competitive, need to start investing in the next generation of talent. And that's the kind of virtuous cycle that we can hope to see in the coming years. Certainly for young kids and young females, you can't be what you can't see. And the fact that there's women on TV now doing things as special as what the guys are doing, I think is really inspiring. So Australia and England are at the top of the rankings for women's cricket around the world. And that's because they've done more until now to build up leagues, to put in the money, to grow the infrastructure and the ecosystem. I'm quite hopeful that with this tournament would go a long way in making our team more competitive. We've seen them performing exceedingly well in the recently held Commonwealth game, then in England series and then in Asia Cup. And I'm quite hopeful it will make our team better and they would make sure that whatever our men team has been able to achieve, they achieve more than that. I think with the women's IPL there is a good chance that India become one of the bigger powerhouses of the women's game. With that as well, you get more opportunity as an overseas player to go and play in these tournaments. So I think there's benefits to be had for everyone. मुझे लगता है ज़्यादा फीमेल्स पे फोकस किया जाता है कि वो क्योंकि कम देखने को मिलता है, लेकिन अब ऐसा नहीं है. अगर आप क्या थे, कुछ इंडिविजुअल गर्ल्स का गैंग थे, वो लोग आ रखे थे जो उस चीज़ को एंजॉय करते, कुछ ड्रम्स लेके आए हुए थे, तो ये बताता है कि वुमेन्स अब इन्वॉल्व हो रही हैं या अपने सिबलिंग्स को या अपने बच्चों को इन्वॉल्व करना चाहती हैं या वो इस खेल को पसंद कर रही हैं. Playing cricket in India is crazy, but when I say crazy, it's incredible. It's like nothing you'll experience anywhere else. When you come to India, you can feel the energy around cricket like nothing else. It gives you such a pulse of the country. And the fact that if we can go over as overseas players and be a part of that, then it's only going to increase my, exposure as a player. It's going to increase my ability because there's more opportunity to play in front of crowds and under pressure. And that's exciting. I think the combination of the national and the international, that balance, I think is most important. The international tournaments like World Cup and television broadcasting of women's games, it's very exciting to see. The growth of women's cricket in England and Australia is great, but in order for women's cricket to succeed on a global level, India needs to be at the centre